Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Hey guys, welcome back to my channel Infotainment Bits. Today in this video we are going to learn about summarizing markers, which is a type of sequence markers. So let's get started. तो summarizing markers क्या होते हैं? What are summarizing sequence markers? समराइजिंग मार्कर्स वो वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो मुख्तलिफ मालूमात के दरमियान ख़यालात को तरतीब देने में मदद करते हैं. समराइजिंग सीक्वेंस मार्कर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं: इन कंक्लूजन, टू समराइज, फर्स्टली, सेकेंडली, इन समरी और वगैरह वगैरह. So, what are summarizing sequence markers? Summarizing sequence markers are words or phrases that help organize information and signal transitions between ideas. They serve as signposts for the reader or listener, indicating where they are in the overall structure of the communication. Examples of summarizing sequence markers include firstly, secondly, in conclusion, to summarize, and in summary. These markers can be used to indicate the beginning, middle, or end of a section or to signal a change in topic or direction. So now the question is how to use summarizing sequence markers effectively. Summarizing sequence markers को कैसे अच्छे से उसका इस्तेमाल करना है. Summarizing sequence markers को इस्तेमाल करते हुए आपने अपने माइंड में इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि आपकी राइटिंग कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, आपकी टेक्स्ट का पर्पस क्या है. क्या आप अपनी राइटिंग के थ्रू किसी को आमादा करना चाह रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं, या आप हौसला अफजाई करना चाह रहे हैं. आपका जो टॉपिक है या जो आपका गोल है ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टाइप और कौन सी फ्रीक्वेंसी के मार्कर्स यूज़ करने हैं. और एक इम्पॉर्टेंट टिप ये भी है कि आपने थ्रू आउट अपनी कम्युनिकेशन या टेक्स्ट में वैरायटी ऑफ मार्कर्स यूज़ करने हैं, मुख्तलिफ मार्कर्स यूज़ करने हैं. ये आपकी ऑडियंस को आपकी राइटिंग में दिलचस्पी देने में मदद करेगा. So, how to use summarizing sequence markers effectively? When using summarizing sequence markers, it's important to keep in mind the purpose of your communication. Are you trying to inform, persuade, or inspire? Depending on your goal, you may need to adjust the type frequency of your markers. Another key tip is to use a variety of markers throughout your communication. This not only helps your audience to keep engaged, but also helps to reinforce the main points you're trying to convey. Common mistakes to avoid. ऐसी गलतियाँ जो आपने करने से बचना है. मेन मिस्टेक ये है कि सीक्वेंस मार्कर्स को आपने अपने टेक्स्ट में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना. आपने अपनी राइटिंग में बैलेंस रखना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस मार्कर्स यूज़ करने हैं. और एक और गलती जो आपने करने से बचना है वो है सीक्वेंस मार्कर्स का गलत इस्तेमाल करना. फॉर एग्जांपल, आप समराइजिंग मार्कर्स यूज़ करें अपनी बात को बार बार रिपीट करने के लिए, रादर देन आप मेन पॉइंट्स को समराइज़ करें और बात का इख्तिताम करें. इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आपने सीक्वेंस मार्कर्स को ट्रूली समराइज करने के लिए ही यूज़ करना है. सो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड? One common mistake people make using summarizing sequence markers is overusing them. While it's important to use these markers to help guide your audience through your message, using them too frequently can actually make your writing seem choppy and disjointed. Instead, try to balance the use of summarizing sequence markers with other types of transitions such as cause and effect or comparison and contrast. Another mistake to avoid is using summarizing sequence markers incorrectly. For example, some people use these markers to simply repeat what they've already said, rather than summarizing the main points of their message. To avoid this, make sure that each summarizing sequence marker is truly summarizing a new idea or concept, rather than just repeating what you have already covered. Practice time. For this practice exercise, you will use a hypothetical scenario. Imagine you are presenting to a group of potential investors about your company's new product launch. You want to emphasize the key features and benefits of the product, but you also want to make sure your presentation flows smoothly and is easy to follow. Using what we have already learned about summarizing sequence markers, take a few minutes to create an outline of your presentation.
think about how you can use these markers to help guide your audience through your presentation and ensure they understand the most important points once you have your outline shared with a partner or colleague and get feedback on how effective it is. आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है. The conclusion has been reached. I appreciate you taking the time to watch our video on summarizing sequence markers. I hope it provided useful information to you. Allah Hafiz. See you in the next video.